Hello students, myself Jinalisha welcomes you on behalf of Saraswat International Academy. Today we will begin with the fourth chapter, Animal Kingdom. So basically the animal kingdom, it is divided into various phylums. But before starting the phylums in detail, we will be studying what characteristics are used to classify the organism. What is the basis of the classification of the organisms? But before that, the introduction part. So when you look around, you will observe different animals with different structures and forms. As over million species of animal have been described till now, the need for classification becomes all the more important. Why we need to classify the animals? Because there are millions of species of the animals, and to study them in detail, for that purpose we require the classification. The classification also helps in assigning a systematic position to a newly described species. Suppose a new species have been found out. So, we can give that new species the systematic position, that is to which phylum it belongs to, what is the family of that particular animal, to what genus that belong. So basically by the help of classification we can give the systematic position to the newly found species. Now what is the basis of classification? That means what characteristics can be used to classify the organisms. In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of the cells, body symmetry, nature of the xylem, patterns of digestive, circulatory or reproductive system. Now see students, all the animals, they will have different structures, different forms, but there are certain common fundamental features in relation to arrangement of the cells. That is, they may have the tissues, all the animals, multicellular animals, they will have the tissue, they will have the organs, they may have the organ system. Then body symmetry, we will study in the later part of this video what is symmetry of the body. Then nature of xylem, xylem is the body cavity, so whether an animal is having a body cavity or not. Then different types of digestive system are there, we will study this also in the later part of the chapter. Different types of the circulatory system, different types of the reproductive system. So these are the certain characteristics which will be helpful in classifying the animals. These features are used as the basis of classification and some of them are discussed here. So, the arrangement of the cell, the symmetry of the body, the nature of the xylem, the patterns of digestive, reproductive or circulatory system, then there are germinal layers. These are certain characteristics which will be forming the basis of classification of the animals. Now some of these we will be studying in detail. So first of all is the levels of organization. So basically we know that members of the animal kingdom are multicellular, but all the animals do not possess the same pattern of organization of the cell. Say for example, in some organisms body is multicellular, but each and every cell will perform each and every activity. In some of them the cells are organized and they form the tissue, that is those cells which are concerned to perform the same function, they will form a group and that is tissue. So it is a tissue which will be functioning. In some organisms these tissues are organized into organs. In some organisms the organs are organized into organ systems. So it is not like that all the multicellular animals will possess the same thing. They have the different levels of organization. So which are the different levels of organization found in animals? So first one is the protoplasmic level. So basically it is seen in the protozoans, mainly protozoans, where they are unicellular.
So basically protozoans are the group of animals which are unicellular and they perform all the biological activities. That is, they are single celled organism where that single cell perform each and every activity of the body. That cell is concerned with digestion of food, that cell is concerned with the respiration, that cell is concerned with circulation, that cell is concerned with reproduction, excretion, etc. So each and every activity of the organism is performed by that particular cell only. So that is called as the protoplasmic level of organization. It is found mainly in the unicellular protozoans. Now the next one is the cellular level of organization. So what is cellular level of organization? So first of all, you have to remember that it is found in sponges. So sponges are the animals. The name of the phylum is sponges, or you can also say porifera, which we will be studying in detail in the other videos. But in the sponges, basically sponges are which type of animals? They are multicellular animals. But here the cells are arranged as loose aggregates, यानी के cells का group छोटे छोटे बने हैं, but each and every cell will perform each and every activity of the body. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स ये डाइजेशन का फंक्शन करेगा, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल रेस्पिरेशन का फंक्शन करेगा, ऐसा नहीं है. ईच एंड एवरी सेल, दो ऑर्गेनिज्म इज मल्टीसेल्युलर, but each and every cell of the body is concerned to perform each and every activity. There is some division of labor, that is division of labor. What is division of labor? So here the definition I have given, different functions are carried out by different groups of cells in an organism, and this is known as the division of labor in multicellular organism. Yani basically what is division of labor? Division of labor, labor यानी काम करने वाले, यानी काम को क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन. से फॉर एग्जाम्पल इफ वी से construction work, so some of them will be assigned some particular work, some of them will be assigned the work of, say for example, making the building, some of them will be assigned the work of mixing the cement and all this work. So what is division of labor? Division of labor means distribution of the work. So some group of say for example हम human people की बात करते हैं, human beings की बात करते हैं. So there is, say for example, एक institute है. So some group of people will be concerned to perform some particular task, other group of people will be concerned to work for some other task, right? So division of labor means what? Distribution of the work. So what is division of labor in the multicellular organism? It is also the division of the work. Which work? Physiological activities of the body. So here the group of the cells are formed and each group of cell performs the particular activity. It is not like that all the cells will perform all the activities. In cellular level it was the case where all the cells of the body perform each and every activity. But what is cellular level? What is division of labor? So there are group of cells which are concerned with performing of the particular function. So in the cellular level of organization, a very little division of labor is found. यानी groups बने होंगे लेकिन बहुत कम. But again that all cells will perform all the activities of the body. So some division of labor occur among the cells, but tissues are absent. Group of cells बने हैं, थोड़े groups of cells बने हैं, but that groups of cells are not the tissues. Cell का group बना है, but that group of the cells will perform all the activities. So here tissues are absent. So what is cellular level of organization? Again I am explaining you. It is the level of organization where the organism is a multicellular organism, but here the cells occur as loose aggregates and each and every cell of the body will perform each and every activity.
Here a very little division of labor is found, but keep in mind that division of labor यानी कि सेल के ग्रुप्स बने होंगे, but that cells group are not the tissue. So that is cellular level of organization. The next one is the tissue level of organization. It occurs in the Seelen traits. So what is tissue level of organization? Here the arrangement of the cell is somewhat complex. So what type of arrangement is found here? So those cells which perform the same functions, they are arranged into the tissues. So what is tissue level of organization? हमने सेल्यूलर लेवल में ये देखा कि ग्रुप सेल के ग्रुप्स बने हैं, बट दैट सेल ग्रुप्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज. सेल के ग्रुप बने हैं, फिर भी ग्रुप्स क्या करते हैं, ईच एंड एवरी एक्टिविटी करते हैं. लेकिन व्हाट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स those cells which perform the same function, they are organized into the tissues. The cells concerned to carry out the same functions, they are organized into the tissue. यानी अभी वो टिश्यू काम करेगा. से फॉर एग्जाम्पल मस्क्यूलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ब्लड है. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. सो क्या करते हैं, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा. मस्क्यूलर टिश्यू किसका काम करेगा? So the name of the work of the muscular tissue is contraction and relaxation. Nervous tissue का काम क्या है? To send the signals, to send the messages. So यहाँ पे tissues बन जाते हैं जो particular functions करते हैं. Blood का काम nervous tissue नहीं करेगा, nervous tissue का काम muscular tissue नहीं करेगा. So those group of cells which perform the same functions, they are organized into the tissues, and it is the tissues, a particular tissue will carry out the particular activity. So that is called as the tissue level of organization, which is found in the Seelen traits. Now the organ level of organization. So basically this type of organization, it is found in platyhelminths and in some other phyla, where the tissues are grouped together to form the organs, each specialized for the particular function. So what is organ level of organization? So here the tissues are organized to form the organ. So group of the tissues get organized, and this organized group of tissue is called as organ, and it is the organ which will carry out the particular function. So organ may have different types of the tissues, but that organ will perform the particular function. So that is organ level of organization. And finally the organ system level of organization. So those organs whose work is to carry out a particular activity. Say for example, I tell you about the digestive system. So we know that there are different organs concerned in the digestive system. There is a mouth, there is a esophagus, then there is a stomach, there is small intestine, there is large intestine. Finally there is anus. Say for example, these are the organs of the digestive system. ओके ये सब ऑर्गन्स का मेन काम क्या है, उनका मेन एक्टिविटी क्या है? सो दे आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. All these organs, they are concerned with the process of digestion. So what is organ system level of organization? Those organs which are concerned to perform the same function, they are associated, they are organized, and they form the functional system called as the organ system. So this organ system of level of organization is found in annelids, arthropods, mollusks, echinoderms and chordates, where organs have associated to form the functional systems, where each system is concerned with the specific physiological functions. So those organs which are concerned to perform the same physiological activity, they are associated with each other and form the organ system.
आई टोल्ड यू वन ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, देर इज़ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम के जहाँ पे आप नोज से स्टार्ट करते हो एंड लंग्स में एंड करते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ पे आर्टरीज है, वेन्स है, हार्ट है. सो दोज ऑर्गन्स विच आर कंसर्न टू परफॉर्म the same physiological activities, they get associated, and what do they form? They form the organ systems. So students, these are the various levels of organization. पहला हमने देखा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि जहाँ पे इन द प्रोटोजोवन देर इज अ यूनिसेल्युलर, दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड दैट पर्टिकुलर सेल इज कंसर्न टू कैरी आउट ईच एंड एवरी एक्टिविटी. सो वो सेल का जो लिविंग मटेरियल है वो प्रोटोप्लाज्म है एंड इट इज़ द प्रोटोप्लाज्म विच कैरीज आउट ईच एंड एवरी एक्टिविटी. सो दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Then we have studied regarding the cellular level of organization found in sponges. So यहाँ पे organisms multicellular है, but that multicellular body वहाँ पे each and every cell क्या करता है, सब function करता है, उनमें proper division of labor नहीं है, यानी सेल को particular work assign किया नहीं गया है. थोड़ा सा division of labor है, but वहाँ पे भी each and every cell क्या करते हैं, सब activities करते हैं. देन देर इज़ अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि जहाँ पे हमने ये देखा कि those cells which are concerned to perform the same function, they are organized into the tissues. So it is the tissue which will carry out the function. Each and every tissue will carry out the different functions. मस्कुलर टिश्यू का काम एक है, दूसरा होगा देन ब्लड का कुछ काम डिफरेंट है, नर्वस टिश्यू का कुछ काम डिफरेंट है, बोन का कुछ काम अलग है. सो टिश्यूज, group of the cells will form the tissues and it is the tissue which will perform their particular activity. Then we have studied organ level of organization कि जहाँ पे tissues are organized to form the organs and organs they form the particular activities or particular functions. देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ पे हमने ये देखा कि दोज ऑर्गन्स विच आर कंसर्न्ड टू परफॉर्म द सेम पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, दे गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड इट फॉर्म्स द ऑर्गन सिस्टम. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गन सिस्टम्स की बात है, सो दिस ऑर्गन सिस्टम्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज. अभी ये जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसी है, डिफरेंट है. से फॉर एग्जांपल एक ऑर्गन सिस्टम की हम बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. सो जो लोअर फाइलम्स है, लोअर एनिमल्स है जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्स, सो उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, दैट डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन ओपनिंग. In the phylum Platyhelminths, the digestive system consists of only one opening. That opening will act as a mouth and that opening will also act as a anus. यानी फूड इनटेक भी वही ओपनिंग से होगा एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल होना है वो भी कहाँ से होगा, वो सिंगल ओपनिंग से. सो दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच the digestive system is having only one opening and that opening act as both mouth and anus, यानी intake of the food and the removal of the undigested food. ये same एक ही opening से होता है. Such digestive system is called as the incomplete digestive system. So we were talking about the complexity of the organ systems in different organisms. So platyhelminths में हमने ये देखा कि digestive system कैसी है, it is not much complex. एक ही opening है, वहाँ से intake भी होगा and वहाँ से removal of undigested food भी होगा. But in the higher animals, say for example we talk about the chordates. So यहाँ पे digestive system के पास क्या होते हैं, it consists of two openings. The opening which is present at the starting point, यानी कि anterior opening कौन सा है, mouth के जहाँ से food का intake होगा. And at the posterior side there is another opening called as anus के जहाँ से there will be the removal of the undigested food. So such digestive system with the two opening, one opening being mouth and the other opening being anus,
Such type of digestive system is called as the complete digestive system. So हमने देखा कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ती जाती है ऑर्गन सिस्टम्स भी क्या होते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं. प्लेटीहेल्मिन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे थी, सिंपल थी, एक ही ओपनिंग था, वहाँ से फूड का इंटेक भी हो रहा था एंड देयर वाज द रिमूवल ऑफ द फूड फ्रॉम दैट सिंगल ओपनिंग. जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन होता गया एंड कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ती गई, सो ऑर्गन सिस्टम्स भी क्या होते गए, दे ऑल्सो बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. सो से फॉर एग्जाम्पल chordates, in chordates क्या कंडीशन है, द डाइजेस्टिव सिस्टम हैव टू ओपनिंग्स, the one opening is called as mouth and other opening is called as anus. So that is regarding the organ digestive system complexity. So a complete digestive system has two openings, one is mouth and anus. So see, this is the diagram. यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई गई है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. सी स्टूडेंट्स, ये एक ओपनिंग है, राइट. दिस ओपनिंग एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस. यही ओपनिंग से फूड एंटर हो रहा है एंड वेस्ट का रिमूवल भी यही ओपनिंग से हो रहा है. सो एज देर इज वन ओपनिंग, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. सो यहाँ पे देखो, द फूड एंटर्स थ्रू माउथ. ओके, माउथ से फिर पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में पास होकर फाइनली जो वेस्ट का एग्जिट है या वेस्ट का रिमूवल है वो कैसा है, दूसरा है. जहाँ से फूड एंटर हो रहा है वहाँ से फूड रिमूव नहीं हो रहा है, देयर इज एन अनदर ओपनिंग. सो हियर देयर आर टू ओपनिंग्स, वन इज माउथ एंड अनदर वन इज एनस. सच डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप्स की होती है. One is open type of circulatory system and other one is the closed type of circulatory system. So what is open type of circulatory system? So यहाँ पे blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed into it. Okay, heart will pump the blood and blood फिर directly क्या होगा, cells या tissues जो है they directly float inside the blood. ऐसा नहीं है कि ब्लड से आर्टरी निकली, आर्टरी से फिर वेन से फिर से हार्ट में ब्लड आया. नो, यहाँ पे ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट. वो ब्लड जो हार्ट से बाहर निकला, इट विल एंटर इनटू द बॉडी कैविटी एंड ये बॉडी कैविटी में सब ऑर्गन्स होते हैं. सो वहाँ पे वो पूरा ब्लड जाएगा. जबकि what is closed circulatory system? Blood is circulated through a series of vessels of varying diameters. यानी आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा समझाती हूँ. तो देयर इज हार्ट, हार्ट में से क्या निकलता है, आर्टरीज. ओके, आर्टरीज में से फिर कैपिलरीज निकालती है जो ईच एंड एवरी सेल को ब्लड सप्लाई करती है. ओके, कैपिलरीज, ओके, फिर वो सेल से क्या निकलेगा, वेन्स. सो कैपिलरीज दे विल फॉर्म द वेन्स, वेन्स फिर से कहाँ पे जाती है, हार्ट पे. सो यहाँ पे ब्लड वेसल्स में फ्लो होते हैं, नहीं के बॉडी कैविटी के अंदर. सो सच टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. See, these are the diagram. This is open circulatory system, this is closed circulatory system. ये देखो, ये क्या है, हार्ट है. ओके, हार्ट में से एक आर्टरी निकली, वो आर्टरी ने फिर ब्लड कहाँ पे दे दिया, डायरेक्टली बॉडी कैविटी में. ओके, ऑल द ऑर्गन्स में. जबकि यहाँ पे क्या है, आर्टरीज आई, आर्टरीज ने कैपिलरीज बनाई. तो देखो, ये जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर ब्लड नहीं आया है, ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज ने फिर वेन बनाई, वेन ने फिर से हार्ट को ब्लड दिया. सो द ब्लड फ्लोज थ्रू क्लोज्ड पाथ इन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, whereas in the open circulatory system blood enters into the body cavity where the organs and tissue path. Such type of circulatory system is an open circulatory system. Okay, now next characteristic used for the classification of organism is symmetry. So what do you mean by symmetry? It refers to the similarity in the arrangement of the parts on the opposite sides of the body. Human beings की बात करते हैं तो दो साइड पे हाथ है, there are on the two sides we have hands, on the two sides we have legs, there are two eyes, nose एक है लेकिन वो डिवाइड करेंगे तो दो पार्टीशंस में होगा. So what is symmetry?
similarity of the arrangement of the parts on the opposite sides of the body. Now, on the basis of symmetry, the organisms are grouped into three categories: asymmetry, radial symmetry, and bilateral symmetry. So, what is asymmetry? Asymmetry means, say for example, कोई एक organism है, वो organism के center से कोई भी आप plane pass करो, any plane passing through the center of the organism does not divide the organism into equal right and left part. Such symmetry is called as an which type of symmetry? Asymmetry. Say for example, ऐसा एक irregular organism है, मैं एक सेंटर से पास कर रही हूँ, सो यहाँ पे organism दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा. Such type of symmetry is called as asymmetry. So when any plane that passes through the center does not divide the organisms into equal half, it is called asymmetry. Most of the sponges are asymmetrical. Say for example, ये एक sponge है, मैंने ये center से ये पास किया है, so body cannot be divided into equal right and left parts. That is called as the asymmetry. The second one is the radial symmetry. Radial symmetry यानी कितने भी plane आप center से पास करो, any plane passing through the central axis of the body, it divides the organism into identical half. यानी आप center से कोई भी plane pass करो, say for example, if we consider a ball, okay, spherical ball, अभी ये ball के सेंटर से आप कोई भी प्लेन पास करोगे, बॉल क्या होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने ही वाला है. देन दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री. एनी प्लेन, से फॉर एग्जांपल आई कंसिडर दिस एज अ ऑर्गेनिज्म, मैं कोई भी प्लेन सेंटर से पास करूंगी, ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा. सच अ सिमेट्री इज कॉल्ड एज अ radial symmetry. And finally, basically it is found in coelentrates, ctenophores and echinoderms. And the last one is bilateral symmetry. So when the single plane, so when the body can be divided into identical left and right half in only one plane, then it is called as bilateral symmetry. ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो अपनी बॉडी में से एक सेंटर में से एक प्लेन पास करेंगे तो बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. सो व्हेन अ सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी divides the body into two equal parts, it is called as a bilateral symmetry, which is found in higher organism, annelid, arthropods, उसके बाद के जो भी कोई फाइलम्स है उसमें यही सिमेट्री मिलेगी. So based on symmetry there are three groups. Asymmetrical, what does that mean? कि सेंटर से आप कोई भी प्लेन पास करो, कुछ भी पास करो, बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी. रेडियल सिमेट्री, सेंटर से कितने भी प्लेन आप पास करो, द बॉडी गेट्स डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. एंड बायलेटरल सिमेट्री यानी सेंटर से सिर्फ एक ही प्लेन पास करोगे एंड बॉडी गेट्स डिवाइडेड इनटू equal right and left halves, then it is called as the bilateral symmetry. So see, this is a radial symmetry, this is a bilateral symmetry. ये ऑर्गेनिज्म में से आप किधर सेंटर से कितने भी प्लेन पास कर रहे हो, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. जबकि यहाँ पे एक ही प्लेन, दिस इज अ सिंगल प्लेन which is passing through the center and dividing the organisms into two equal parts. So that is bilateral. See, these are the organisms. Here you can see asymmetry. देखो मैं सेंटर से कितने भी प्लेन पास करूँगी, ये बॉडी का इक्वल डिवीजन नहीं होने वाला है. रेडियल सिमेट्री, कितने भी प्लेन पास कर रहे हो, बॉडी इज गेटिंग डिवाइडेड. ह्यूमन बींग विथ अ बायलेटरल सिमेट्री. See here, any plane passing through the center will be dividing body into equal parts. This is radial, this is bilateral कि एक ही प्लेन में सेंटर से पास करोगी, बॉडी दो इक्वल पार्ट्स. यहाँ से मैं किधर भी कुछ भी पास करूँ ये नहीं होने वाला है.
So that is the symmetry. Okay, next characteristic is the germinal layers. Now first of all, what is germinal layers? So zygote in the sexually reproducing organism, पहला सेल कौन सा बनता है? zygote. zygote में डिविजन होकर क्या बनते हैं? एम्ब्रियोज. सो दिस अर्ली एम्ब्रियो, जो इनिशियली एम्ब्रियो बनता है, वहाँ पे जो सेल्स होते हैं, दिस सेल्स गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू द लेयर्स. So early embryos they acquire the cell layers, वो layers में organized हो जाते हैं, and these layers are called as the germ layers. Now एम्ब्रियो फिर किस में कन्वर्ट होता है? फीटस में कन्वर्ट होता है, वो पूरा ऑर्गेनिज्म को बनाता है. सो इट इज फ्रॉम दिस जर्म लेयर्स दैट the adult animal will develop. So all the parts of the body of an adult animal, say for example human beings का बात करते हैं, we have many body parts, right? So ये body parts किस में से बने हैं? The germ layers. और germ layers कैसे बने हैं? So embryo जो होता है, embryo के cell का distribution होता है, and they get organized into the layers. These layers are called as germ layers, and it is the germ layer which is responsible for formation of all parts of the body of an adult animal. Each germ layer produces the specific sets of organs. Now, कितने germ layers बने हैं organisms में? On that basis, there are two types of organisms. Diploblastic organism, triploblastic organisms. So जिनमें there is a formation of two germinal layers, they are called as diploblastic animal. Diplo, di, it means two. And जहाँ पे there is the formation of three germinal layers, tri, it means three. So those organisms in which there is the formation of three germinal layers, they are called as the triploblastic animals. So on the basis of the number of germinal layers, the organisms are divided into two categories, diploblastic and triploblastic. So what is diploblastic? Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, the external ectoderm and an internal endoderm. They are called as diploblastic animals. Examples, coelentrates. So what are diploblastic animals? I told you, early embryos they get organized into the cell layers which are called as germ layers. So जहाँ पे सिर्फ दो ही germinal layer बनते हैं, that is outer layer is called ecto means out, and the inner layer is called endoderm, endo means inside. So those organisms which form only two germinal layers, ectoderm and endoderm, they are called as the diploblastic animals, and their example is coelentrates. Now in between these layers in diploblastic organism, there is a presence of undifferentiated mesoglea. Mesoglea, it is a gelatinous non-cellular connective tissue layer which is present between ectoderm and endoderm. Say for example, ये outer layer है ectoderm, ये inner layer है endoderm. ये दोनों के बीच में एक gelatinous material है, जिलेटिन जैसा मटीरियल है जिसको बोलते हैं मेसोग्लिया. मेसोग्लिया इज नॉट अ cellular layer but it is a material called as the gelatin. So in between ectoderm and endoderm in diploblastic animals is the presence of the undifferentiated mesoglea. So that is regarding the diploblastic organisms. Now triploblastic. So those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between ectoderm and endoderm are called as the triploblastic animals. So यहाँ पे क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में? आउटर लेयर कौन सा होता है? एक्टोडर्म. इनर लेयर कौन सा होता है? एंडोडर्म. ये दोनों लेयर के बीच में एक तीसरा सेल्यूलर लेयर बनता है. And what is that third cellular layer called as? Mesoderm. Meso means middle. So ecto, outer, meso, middle, endo, inner. So there are three germinal layers. Such organisms are called as
triploblastic animals. Example, platyhelminths to chordates. Which are the example? Platyhelminths to chordates. So this is regarding the organisms classification on the basis of germinal layers. See, these are the germinal layers. This is a diploblastic organism, this is a triploblastic. So यहाँ पे आप देखो कि ये बीच में की कैविटी है, मेनली ये डाइजेस्टिव कैविटी है, वो सराउंडेड है एक इनर लेयर ऑफ द सेल, ये एंडोडर्म. ये बाहर सेल्यूलर लेयर है, वो कौन सा है? एक्टोडर्म. ये दोनों के बीच में ये देखो, ये कैसा लेयर है? नॉन सेल्यूलर. दिस नॉन सेल्यूलर रीजन बिटवीन ectoderm and endoderm is the mesoglea. And this is a triploblastic organism कि जहाँ पे ये देखो एक सेल्यूलर लेयर है जिसको बोलते हैं एंडोडर्म. एंडोडर्म के ऊपर और एक लेयर है जिसको बोलते हैं मीजोडर्म. एंड फाइनली देयर इज द एक्टोडर्म. सो देखो 3 सेल्यूलर लेयर्स है. वन इज यू आर सीइंग इन ब्लैकिश कलर, वन यू आर सीइंग इन रेड कलर एंड अनदर वन इज पर्पल कलर. 3 सेल लेयर्स है. जबकि इन द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एक अंदर सेल्यूलर लेयर है, एक बाहर है. ये दोनों सेल्यूलर लेयर के बीच में एक नॉन सेल्यूलर रीजन है जिसको बोलते हैं मिजोग्लिया. सो दिस आर द जर्मिनल लेयर्स. ये भी एक वही डायग्राम है. देखो वो इनर कैविटी मैंने बोला डाइजेस्टिव कैविटी है, उसके सराउंडिंग एंडोडर्म है, ये बाहर एक्टोडर्म है. ये डिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में क्या है? नॉन लिविंग लेयर जिसको बोलते हैं मिजोग्लिया. जबकि यहाँ पे एंडोडर्म, मिजोडर्म एंड एक्टोडर्म. नाउ the next characteristic used in classification of organism is the coelom or the body cavity. Now what is coelom? So पहले तो body cavity या coelom क्या है? So अपने body wall और gut wall यानी बाहर की body का wall और अपनी digestive cavity उनके बीच में अगर कोई cavity है then that cavity is called as the coelom. What is a coelom? A cavity which is present in between the body wall and gut wall. Gut wall यानी digestive, यानी कि digestive system या digestive tube का wall और अपनी body का wall, body का inner part का wall. So say for example ये body wall है. Say for example this is a body wall और ये एक digestive cavity है और ये फिर से body wall है. So this is a body wall, this is a digestive cavity, again this is a body wall. अगर ये दोनों के बीच में कोई cavity है then that cavity is called as a body cavity or also it is called as the coelom. So on the basis of the presence or absence of body cavity there are 3 kinds of organisms: acoelomates, pseudocoelomates and coelomates. acoelomate यानी बॉडी कैविटी नहीं है. स्यूडो कैविटी, स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो मीन्स फॉल्स यानी फॉल्स अपने को लगती है कि वो कैविटी जैसी है एंड सिलोमेट्स यानी कैविटी है. वी विल स्टडी देम इन डिटेल. सो फर्स्ट वन इज द एसिलोमेट्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय एसिलोमेट? द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट यानी डाइजेस्टिव कैविटी और बॉडी वॉल के बीच में कोई कैविटी नहीं है. Such organisms are called as acoelomates. The examples are platyhelminths. यानी they does not have any other cavity except the digestive cavity. उनमें जो cavity है वो सिर्फ क्या है? digestive system है, बाकी और कोई cavity ये organism में नहीं है. Pseudocoelomates. In some animals the body cavity is not lined by mesoderm. Instead the mesoderm is present as the scattered pouches between ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom and the animals possessing them are called as pseudocoelomates. Example SK helminths. So what is pseudocoelomate? यहाँ पे क्या होता है? Body cavity it is not lined by mesoderm. Body cavity दिखती है but that body cavity it is not surrounded by mesoderm. इंस्टेड ऑफ दैट क्या होता है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में mesoderm is organized in the form of the pouches, scattered pouches. So such a body cavity is called pseudocoelom. Pseudo यानी false. अपने को लगता है कि
कैविटी है, बल्कि वो एक्चुअली दैट इज नॉट अ कैविटी बट इट गिव्स दैट अपीयरेंस. Such organisms are called as pseudocoelomates and such cavity is called as the pseudocoelom. Examples are Escahelminths. And finally coelomates. What are coelomates? So here the body cavity which is lined by mesoderm. See, pseudocoelomates में क्या था? Mesoderm was found in the form of scattered pouches. जबकि in the coelomates जो बॉडी कैविटी है इट इज लाइंड बाय द मेसोडर्मल लेयर. सो सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज द coelomate. एग्जाम्पल annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, hemichordates and chordates. So on the basis of the absence or presence of the body cavity, organisms are divided into three. acoelomates के जहाँ पे कोई बॉडी कैविटी नहीं है, the only cavity present is the digestive tube. Pseudocoelomates, ectoderm एंड एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म होना चाहिए, बट यहाँ पे वो जो कैविटी है इट इज़ नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. इंस्टेड ऑफ दैट मेसोडर्म इज अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ द पाउचेस. दैट इज कॉल्ड एज द pseudocoelomates. एंड coelomates जहाँ पे बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय द मेसोडर्म, they are called as the coelomate animals. So this is a diagram. First one is a coelomate, second one is a pseudocoelomate and the lastly is the acoelomate. So ये देखो कि ये बीच में का जो पार्ट है वो डाइजेस्टिव कैविटी है. ये जो डाइजेस्टिव कैविटी है वो किससे सराउंडेड है? सीलम. बेसिकली दिस कैविटी इज कॉल्ड एज द सीलम. एंड ये सीलम के सराउंडिंग क्या है? देखो ये रेड कलर का लेयर, that is called as the mesoderm. So that is the coelomate. अभी ये देखो, ये this is what the black colored part, it is called as the endoderm. ये green color purple color का part, that is the ectoderm. ओके ये दोनों के बीच में ये कैविटी अपने को दिख रही है, बट ये कैविटी इट इज़ नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म एज इन द coelomate. जबकि यहाँ पे मेसोडर्म देखो ये ऐसे पाउचेस बना दिए हैं, ग्रुप्स बना दिए हैं. सो सच कैविटी इज कॉल्ड एज pseudocoelom एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड एज pseudocoelomates. एंड यहाँ पे देखो कि ये क्या है? डाइजेस्टिव कैविटी है. ओके डाइजेस्टिव कैविटी इज डायरेक्टली सराउंडेड बाय एक्टोडर्म एंडोडर्म, फिर ये मेसोडर्म डायरेक्टली आ गया एंड यहाँ पे आ गया एक्टोडर्म. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई भी कैविटी नहीं है. सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज द acoelomate animals. So that is regarding the classification of the organisms on the basis of the presence or absence of the body cavity. Now next characteristic is used for the classification of the organism is metamerism or segmentation. So what is that? Segmentation refers to the linear repetition of the parts in the animal body. So basically parts का repetition होता है body में, that is called as the linear repetition of the parts in the animal body. What is that called as? Segmentation. Now students, ये जो segmentation है it occurs in mainly three phylums, Annelida, Arthropoda and Chordata. So this characteristic is found only in the three phylums, Annelids, Arthropods and Chordates. यहाँ पे basically the body is नाम से ही we can say segmentation. So the body is segmented externally as well as internally. यहाँ पे each segment what is it called as? Each segment is called as a metamer. Now segmentation when it affects both external and internal structure, then such condition is called as metameric segmentation. यानी जब segmentation externally as well as internally affect करता है, that is called as metameric segmentation. Simple terms में मैं explain करती हूँ. earthworm, आप सब ने earthworm देखा है. earthworm की body externally you can say कि छोटे छोटे segments दिखते हैं, it is divided. Same way earthworm में internally भी segmentation होता है. So when segmentation affects both external and internal orally, then it is called as the metameric segmentation. हमने बोला कि chordates में भी segmentation होता है. So human beings come under the phylum chordates. Okay. So human beings में आप अभी ये सोचोगे कि body बाहर से कहाँ पे segmented है, कुछ segments तो दिखती नहीं है.
सो बेसिकली ह्यूमन बींग्स में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में सेगमेंटेशन दिखती है. जैसे ही ऑर्गेनिजम्स एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं और बेसिकली एम्ब्रियो से फीटस बन जाता है, तो सेगमेंटेशन इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर ऑर्गन्स. जैसे वेन्स है, आर्टरीज है, अपने रिब्स है, वर्टिब्रल कॉलम है, दैट आर ऑल सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स. सो that is the condition in chordates. In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. So that some organs get repeated. Say for example, मैं human beings की बात करती हूँ. Ribs है, तो कितने ribs है? Repetition है, 12 pairs of ribs है. Vertebral column, so ये vertebra कितने हैं? जितने भी है. So basically organisms में that is called as the segmentation. Example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation and the phenomenon is called as metamerism. देखो, ये earthworm की body है, तो externally आप लोग देख सकते हो ये segmented है. एंड यहाँ पे ये जो पार्ट्स दिखाए है वो अंदर की सेगमेंट्स भी दिखाई है. सो व्हेन द बॉडी इज सेगमेंटेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, इट इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. ये कॉकरोच है जो आर्थ्रोपोड्स को बिलोंग करता है. तो देखो यहाँ पे जो सेगमेंटेशन है वो एक्सटर्नली होता है. सो फॉर्मेशन ऑफ द सेगमेंट्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली, इट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म. The other characteristics used for classification of organism is presence or absence of the notochord. Now basically notochord is mesodermally derived rod-like structure. मैंने बोला कोई भी ऑर्गेनिजम्स का कोई भी पार्ट कौन बनाने वाला है? जर्म लेयर्स. कितने जर्म लेयर्स है? सो इन टोटल 3 है. डिप्लोब्लास्टिक में 2 रहते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. सो नोटोकॉड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो किस में से फॉर्म होता है? मेसोडर्म में से. formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals. So ये कौन सी साइड बॉडी के बनता है? डोर्सल साइड. अगर ह्यूमन बींग्स को कंसिडर करते हैं तो फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड एज वेंट्रल पार्ट, द बैक पार्ट इज कॉल्ड एज द डोर्सल पार्ट. So in certain organisms during the embryonic condition, a rod-like structure is formed from the mesoderm. That rod-like structure formed is called as the notochord. So those animals which have notochord, they are called as chordates. So animals with notochord, they are called as chordate. But those animals in which this structure is not formed, those animals के जहाँ पे notochord नहीं है, those are called as non-chordates. All the animals from Porifera to echinoderms, they are non-chordates. So that is regarding the various characteristics which are used to classify the organisms. Apart from this, there are other structures too कि जब हम directly उसकी बात करेंगे जब सब phylums को discuss करते हैं, जैसे presence or absence of head, types of the nervous system, then types of the respiratory system, कैसे reproductive systems है. These are all other characteristics which will be helpful in the classification of organisms, of animals. Now this is a brief diagram or brief chart showing the classification of animals. Okay, so we are talking about which kingdom? Animal kingdom, which is a group of the multicellular organisms. Okay, I told you कि we will be studying different characteristics to classify the organisms like level of organization, symmetry, body cavity and the phylums of the organisms. Okay. Now on the basis of levels of organization, there is cellular level of organization and another one is tissue, organ and organ system. Okay, cellular level of organization जिसमें है उनकी सिमेट्री कैसी है? दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, यानी बॉडी किधर से कोई भी प्लेन सेंटर से पास करो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल पार्ट्स, सो दैट इज़ एसिमेट्रिकल बॉडी. उनमें सीलम है ही नहीं, यानी वो कैसे है? एसिलोमेट. सो विच इज़ दैट फाइलम? पोरीफेरा. ओके, नाउ अदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, राइट. नाउ जिनमें टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है,
that animals on the basis of symmetry may be either having radial symmetry or they may be having the bilateral symmetry. Okay, so asymmetry सिर्फ पोरीफेरन में है. Now in the organisms with tissue level of organization or organ system level of organization, in them symmetry may be either radial or bilateral. Okay, if they have a radial symmetry then basically they will be acoelomate, यानी body cavity होगी नहीं. Okay, and the examples are phylums are Coelenterate and Ctenophora. These are the two phylums with the radial symmetry and they are acoelomates. Okay, now other symmetry is a bilateral symmetry. In bilateral symmetry, organisms may be having three types of the cavity. Either they will be without a body cavity, that is they may be acoelomate, or they may have a false coelom, that is pseudocoelomates, or they may be with the true coelom, that is they may be coelomate. acoelomate है तो platyhelminths, pseudocoelomate है तो escahelminths, and if they are coelomate then they are annelids, arthropods, mollusca, echinodermata, hemichordata and chordata. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इकाइनोडर्मेटा के आगे एक एक्स्ट्रिक मार्क किया है. सो व्हाट डज दैट इंडिकेट? सो दैट इंडिकेट्स कि उनमें रेडियल या बाइलेटरल दोनों सिमेट्री हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, यानी लार्वल स्टेज में है या एडल्ट स्टेज में है. ऑन दैट बेसिस organisms may have either radial or the bilateral symmetry. Mollusca, see echinodermata, they are coelomate animal, but उनमें symmetry की बात होती है तो either they may have the radial symmetry or the bilateral symmetry depending upon the stage of the organism. Larval stage में कोई different symmetry होगी, adult stage में different symmetry होगी. So this is a brief classification of organisms. Students, now बाद में हम ये देखेंगे कि we will be studying all these phylums in detail in our next video. So today we have completed our topic called as the various characteristics which will be useful in classifying the organisms. Which characteristics which we studied? We studied level of organization, we have studied the symmetry, we have studied the germinal layers, we have studied the segmentation, we have studied regarding basically the presence or absence of notochord, and also we have studied the chart showing the classification of organisms. Today I end my lecture here. In the next lectures we will be studying each and every phylum in detail. Thank you students.